dear students, myself Gangadhar Solanke, and I welcome you all to the MCGM's virtual classroom. My dear students, today in our 6th standard geography, we'll be learning the topic energy resources. Our last chapter was natural resources, and in that topic, we people learnt about the concept of natural resources and how natural resources fulfills our needs by using natural resources. Now in this topic we are going to talk about the resources which we use for different purposes and which are under the heading of energy resources. Now to understand this in detail, we are having some pictures in our textbook, and the first one is of study, where you can see two children studying in the light of a lantern. First image. Then next one, figure 9.2, use of mineral oil. You people just observe this figure, then we'll talk on it in detail. Third one, figure 9.3, pinwheel, this one, and winnowing, which is related with the agriculture. Then figure 9.4, using natural gas as fuel. One more, here you can see about solar energy panel, but before that we have questions. Which energy resources is used? Which energy resource is used in figure 9.1 to obtain light? Now if you people check this figure 9.1, and the question is which energy resource is used in figure 9.1 to obtain light. Now here we can see studying in the light of a lantern. So for this lantern kerosene is used, so the kerosene is the energy resource. Then where did this resource come from? अब ये हमें पता चला कि ये दिया किस से जल रहा है, किस चीज से जल रहा है, तो वो चीज कहाँ से आई, वो जो रिसोर्स है वो कहाँ से आया. Then in figure 9.2 shows fuel being filled in a motor car. आपने कई बार देखा होगा टू व्हीलर या फोर व्हीलर जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें हमें पेट्रोल या फिर डीजल भरना पड़ता है. कई बार पेट्रोल पंप पे हमें उस गाड़ी को लेके जाना पड़ता है. सो हियर इन फिगर 9.2 which shows fuel being filled in a motor car, from where was this energy resource brought to the pump? It is clear that here there is a car in which fuel is being filled. तो क्वेश्चन ये है कि ये पेट्रोल पंप पे ये पेट्रोल है या डीजल है, जो भी है वो कहाँ से आता है. देन फिगर 9.3 shows मालती with her pinwheel and her father winnowing grain. अब यहाँ पर हमारा पिक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है टेक्स्ट बुक से, बट ये जो pinwheel और winnowing है वो सेम है. सो द क्वेश्चन इज हु इज हेल्पिंग बोथ ऑफ देम. ये pinwheel जो घूम रहा है उसे और ये जो विनिंग हो रही है ये किस चीज की हेल्प से हो रही है? द आंसर इज एयर. एयर से हो रहा है. देन द नेक्स्ट वन, विच एनर्जी रिसोर्स इज यूज्ड फॉर लाइटिंग अ लैम्प, रनिंग अ रिक्शा हियर ऑन दिस, and heating oil as shown in figure 9.4. And the next one, what are the various purposes for which man can use sunlight? What are the various purposes for which man can use sunlight? Now the answer is very simple, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं कि सनलाइट किस किस चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर यूज़ किया जा सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट एंड हमारे डेली रूटीन में जो होता ही होता है, कपड़े सुखाने के लिए हम सनलाइट का यूज़ करते हैं, और कई चीज़ें आप इसमें
ऐड कर सकते हैं। देन फॉर विच ऑफ द अबोव एनर्जी रिसोर्सेज डू वी हैव टू स्पेंड मनी? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला था हमारा स्टडिंग इन द लाइट ऑफ लैंटर्न वेयर वी यूज केरोसिन एज एनर्जी रिसोर्स, तो वो लाने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है। देन इन फिगर 9.2 यूज ऑफ मिनरल ऑयल, जो कार में फ्यूल भरा जा रहा है, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड मनी। देन इन फिगर 9.3 अ पिन व्हील एंड विनोइंग, देयर वी डोंट नीड मनी, हवा है और वो हमारे लिए फ्री है, तो वहां पर हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। देन इन फिगर 9.4 यूजिंग नेचुरल गैस एज अ फ्यूल, हियर ऑल्सो वी नीड money or we have to spend money. And in figure 9.1 a solar energy panel. Now again solar energy panel खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन उसके बाद जो काम होगा सनलाइट से उसके लिए हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा. So the question was, for which of the above energy resources do we have to spend money? For this we have to spend money, for this we have to spend money, for LPG also we have to spend money, but for this there is no need to spend money because it is available naturally and free for all. ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए है, सबके लिए क्या है, available है. We engage in various activities to fulfill our needs and for which we need energy. Now here it is very important to understand that why we need energy, and in this chapter we are going to talk about from where we are getting this energy, and that is we call energy resource. And then we'll talk about the types of energy resources also. So here one thing which is very important to understand, we engage in various activities to fulfill our needs. Now if we people only talk about our basic needs like clothing, then shelter and food, और इसके बाद में फिर बहुत सारी नीड्स हमारी है, ये सारी नीड हम लोग फुलफिल करते रहते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड एनर्जी. इन द पास्ट human labor and animals were used for many tasks. For example, you can see on the screen, or you people already learned about that in 5th standards EVS part 2, that how people started using animals for their work or for different purposes. जैसे डॉग था कि पहले सबसे पहले यूज़ हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी एनिमल्स जो खेती में हेल्प करने लगे ह्यूमंस को. So human labor and animals were used for many tasks. Then man's needs increased, and with it several changes took place in the use of energy resources and devices. Now best example of this is on the screen. पहले इसका यूज हो रहा है जिसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे. खरीदना है तो पैसे देने पड़ेंगे, उसको खाना जो खिलाया जा रहा है उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, बट कंपेयर टू अदर थिंग्स कम लग रहा है. बट जैसे ही अपग्रेड हुआ विद द मशीन, जैसे ट्रैक्टर है, एंड man mainly obtains this energy from nature. कहाँ से मिल रही है? नेचर से. So you must have realized this while answering the above questions. जो भी हमने डिस्कस किए questions, we use petrol, we use wind, we use natural gas, we use sunlight, etc. besides other resources. Now energy resources can be classified in many ways, such as conventional, non-conventional. Try to understand this. Conventional sources of energy and non-conventional sources of energy, फिर उसमें भी अलग अलग types है. But here conventional, non-conventional, then biotic, abiotic, renewable, non-renewable, substance based and process based, etc. So here now in conventional sources
Again, two types, commercial and non-commercial. In commercial we have coal, petroleum and electricity. In non-commercial, firewood, straw, dried dung. Non-conventional में bioenergy, solar energy, wind energy, tidal energy, energy from urban waste. Here also you can see non-conventional energy resources, solar energy and wind energy. Here again coal and LPG. These are the different types, or the sources are classified into these types. Non-renewable, oil, natural gas, coal, uranium. रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज करके हम उसे रिन्यू नहीं कर सकते. रिन्यूएबल में वी आर हैविंग सोलर पावर. आज सन की जो एनर्जी है या सोलर एनर्जी है उसका यूज़ हम कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं. सेम थिंग इज विद द विंड पावर, वेव पावर, टाइडल पावर्स, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एंड इन रिसाइक्लेबल uranium which can be used again and again. Again, to understand this in detail, classification of energy resources based on usability: primary, intermediate, secondary. Based on traditional use, conventional, non-conventional. Based on long-term availability, non-renewable, renewable. Based on commercial application, commercial, non-commercial. And based on origin, fossil, nuclear, hydro, solar, wind, biomass, geothermal, wave, ocean, thermal, ocean wave. All these are the different types. Next thing, this table is given in our textbook about the substance based energy resources and process based energy resources. Now what we have in this table: characteristics of substance based energy resources and characteristics of process based energy resources. Or we can say, by using these points, we can classify or differentiate between substance based energy resources and process based energy resources. So we'll start. Examples for substance based energy resources: wood, coal, mineral oil, natural gas, waste matter, atoms. And if we talk about the examples of process based energy resources: the sun, wind, water, tides, and heat from the earth's interior. Substances get used up, उनका पूरी तरह से क्या हो जाता है, यूज्ड हो जाता है. Processes are always available. The sun always available, wind always available. It is not about wood. वुड के बारे में हम ये नहीं कह सकते. मिनरल ऑयल के बारे में हम ये नहीं कह सकते. रीयूज इज नॉट पॉसिबल. वंस यू यूज मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस तो उसका यूज खत्म हो गया, आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते. बट हियर इन प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस रीयूज इज पॉसिबल. Availability is limited. Availability is unlimited. If we talk about wind, हवा इतनी अवेलेबल है, जितनी चाहिए उतनी ले लो, which is unlimited. Takes thousands of years to replenish them. उनको फिर से बनने के लिए thousands of years लगते हैं. About that you people will study in detail in higher standards. These are easily available in nature like the sun, wind, water. Except for atomic energy, all other resources are biotic. And all processes are natural here in process based energy resources. Generation of energy leads to pollution. If we use wood, coal, mineral oil, so there is chance of pollution.
but when we use process based energy resources, generation of energy is pollution free. अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं या फिर टाइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो इससे कुछ पोल्यूशन नहीं होता है. Except for atomic energy, all other resources are conventional, and all these resources are non-conventional. Generation of energy is relatively cheap. Developing the technology for the use of these resources is expensive. Now this difference is very important to understand. Generation of energy is relatively cheap. If we are trying to get energy from wood, it is relatively cheap. वुड को जलाना है उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, या फिर कोल को जलाना है उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, तो उसमें कम पैसा लगता है या फिर वो जनरेट करना ईजी है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, देन इट इज़ एक्सपेंसिव. यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज इज एक्सपेंसिव. जैसे टाइड से या फिर विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो उसको एक प्रोसेस है और उसमें बहुत पैसा डालना पड़ता है, विच इज़ एक्सपेंसिव टू मेंटेन ऑल्सो. Being inflammable, these resources cause damage to the environment. In the long run, these energy resources are environment friendly. The sun, wind, water, tides, and heat from the earth's interior, all these resources are environment friendly. Type of power generation: thermal and atomic. And here, type of power generation: thermal and kinetic. So these are the characteristics, we can say, of substance based energy resources and process based energy resources, or we can say differentiate or differentiation between substance based energy resources and process based energy resources. exactly दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के एग्जाम्पल्स क्या है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हमने इस चार्ट में पढ़ा, इस टेबल में पढ़ा. Now, next point. Again, figure 9.6, cooking on a stove. Figure 9.7, roasting on a coal burner. Figure 9.8, cooking on a kerosene stove. Figure 9.9, removing baked items from an oven. Figure 9.10, cooking on a gas stove. So here, in all these images, cooking is the common thing. यहाँ पे भी कुकिंग हो रही है, 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 यहाँ पे भी कुकिंग हो रही है. मतलब कुछ ना कुछ पकाया जा रहा है. बट द वेज आर डिफरेंट. वो करने के तरीके क्या है, वो अलग अलग है ना. यूजिंग these energy resources जो हमने पहले पढ़े, we can undertake the kinds of power generations like hydel power, thermal power, atomic power, geothermal power, etc. In thermal power stations, it is necessary to burn the energy resources directly to generate electricity. But when we talk about kinetic energy, it can also be used to generate power or electricity. About that we'll study in detail. But here now, about figure 9.6 to figure 9.10, which shows that various energy resources are used for cooking food. जैसे यहाँ पर स्टोव का यूज़ किया जा रहा है, बट बाय यूजिंग वुड. हियर रोस्टिंग ऑन अ कोल बर्नर, तो यहाँ पर कोल का यूज़ किया जा रहा है. हियर केरोसिन का यूज़ किया जा रहा है. रिमूविंग बेक्ड आइटम्स फ्रॉम एन ओवन, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है. कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव, तो इधर एलपीजी का यूज़ किया जा रहा है. Now what you people have to do, you have to list these resources, then classify them using the chart just now about which we have talked. Discuss whether we can use alternate energy resources for cooking. Now this work you people have to do by studying or by observing these figures. Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications. So my dear ones, this is all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.